So good afternoon, all of you. Yesterday, which hate speech खत्म किया था? That was the last. अच्छा, okay. Issue of artistic freedom. Fine. So now, in freedom of speech and expression, you can also write just about freedom of press. ठीक है? The issue of freedom of press in India. So basically, according to your impression, what is the state of freedom of press in India? Is press very free? Press is not free. Who is controlling the press? Capitalist and ruling party. Modi is controlling all media. So press is not that free. And in what way press is controlled? Is there a censorship on the press? Censorship on press ऐसे directly नहीं है, ठीक है? लेकिन when you bring the issues like defamation, contempt of court, hate speech, blasphemy, तो censorship ही censorship है actually. Fine. Pardon? वैसे theoretically speaking, constitutionally speaking, there is no restriction on media. But if freedom of speech and expression is constrained, obviously freedom of media is also constrained. Fine. So freedom of speech and expression or freedom of press. So first of all, right, or basically most of the cases that we see deals with the issue of violation of the rights of journalists only. When you talk about hate speech, ये जितने issues हैं, ये उसी से लेंगे. Fine. So now first of all, what is the importance of free press? Write down. What is the importance of free press? Right. In the words of Pandit Nehru, I will prefer free press with no government rather than government without free press. ठीक है? अब basically what is the importance of free press? You can write, press is known as the fourth estate. Fourth estate. The fourth pillar of democracy. So basically, civil society can express itself through the freedom of press or through the press. That is the importance. And you cannot think about democracy without free and fair press. Now, what is the state of freedom of press in India, right? What is the state of freedom of press in India? Right. According to the Freedom of Press Index, there is a continuous decline in the freedom of press in India.
अब लिखो राइट, what does it indicate, what does it indicate when we say that freedom of press is declining? First, right, there are number of laws which cannot be treated as reasonable restrictions. For example, defamation as a criminal liability. Okay. Next, there has been attacks against the journalists ranging from physical attacks to the journalists booked under preventive detention laws. Preventive detention laws. Next, loss of editorial freedom. Because of commercialization. Even government has allowed FDI also. Fine. So this somehow impacts the editorial freedom, and so the state of freedom of press is bad. अब लिखो, is media powerful in India? Is media powerful in India? Is media powerful in India? लिखो right, it is a paradox. It is a paradox that on one hand there is a decline in freedom of press. You can just write India's ranking. India's ranking in 2016 was 133, 2017 India's ranking was 136, 2018 138, 138. Fine. Actually, freedom and power is different, and because there is no freedom, that is why it is becoming powerful. Fine. So journalists may be weak, but the media houses are quite powerful, and many politicians, the corporate groups owning the media houses. Fine. So it's a paradoxical situation where freedom of press is very poor, but at the same time media is very strong. ठीक है? ठीक है? Right? However, the media is very strong. फिर लिखो right next. In context of media, right, we should not be confusing freedom and power.
फ्रीडम एंड पावर, पावरफुल है लेकिन फ्री नहीं है, ठीक है, और एक बैक चैनल बन गया है टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज एंड एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, पावर तो करप्ट ही है, पावर करप्ट्स, ठीक है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, तो पैराडॉक्सिकल सिचुएशन एग्जिस्ट। व्हाट भाई, फ्रीडम मतलब फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर व्यूज, freedom to give neutral views, that is not there, because the politicians, the business houses, they are controlling the media, and because the media has become another way to control, ठीक है, तो those who are elite class, they are controlling the mainstream media, but the biggest problem is lack of neutrality, lack of ethics in media, ठीक है, तो you can write that. Right, the mainstream media is being criticized as echo chamber of elites, echo chamber of elite class, right? There is a problem of lack of ethics in media. Right? Media can play a very progressive role but unethical media can be highly dangerous. Right? Historically, media in India has played the role of bringing silent revolution during national movement and all, comma, but unfortunately there is a huge dissatisfaction now. Let us see some of the right, constitutionally media is free, right? Some of the prominent judgments related to media, yeah, freedom of press include there are three important cases. One is Bennett Coleman versus Union of India case, 1973. Bennett Coleman versus Union of India case, 1973. Right, government cannot restrict the number of pages comma, or limit the circulation because number of pages can be made limited, so you can evade or government can force in this way
that the media has to cut short the stories. So this is also a smart way that has been used to curb the media freedom. So there is no such, you can have as many pages as possible. Fine. Next case, Sakal paper, Sakal paper, Sakal paper case, SAKL, Sakal case. Right. In the name of regulation of commercial aspects, in the name of regulation of commercial aspects, government cannot put restrictions on newspapers. मतलब डिफरेंट टाइप के लॉज में ट्रैप नहीं कर सकते हो कि दिस एडवर्टाइजमेंट दिस दैट एंड ऑल, बिकॉज दैट कैन इम्पैक्ट मीडियाज फाइनेंसेस एंड ऑल. तो completely or lot of liberty is being given to media. Next is Indian Express. Indian Express case. In Indian Express case, like government trying to curb the media freedom by impacting or by imposing huge burden or huge tax burden on media. So huge tax burden on media can reduce media's resources. Fine. So it has been decided that government has power to put taxes on the newspapers, ideally minimum taxes so that they reach to everyone. But there can be a question mark that the rate of taxation is not reasonable. So this strengthens the position of media. Fine. So right, government can impose taxes. हाँ, इसमें government can impose taxes, but there can be a question on the reasonability of the tax. So that it does not adversely impact the financial resources or independence. Or independence. Right, next paragraph. The present government tried to bring new guidelines, for accreditation of journalists. Accreditation of journalists in April 2018, but later on, April 2018, but later on it had been suspended and referred to the expert committee. Referred to the expert committee after protest by journalists. Now the question was, why new guidelines, right? Why new guidelines? Right, to deal with the problems of fake news.
ठीक है. But again, fake news, how to ascertain the fake news, this again gives lot of scope for government to exercise these powers in an arbitrary manner. तो फेक न्यूज़ तो ठीक है, लेकिन फेक न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में कर्बिंग मीडिया फ्रीडम, arbitrarily cancelling the licenses of the journalist. So there was a huge scope for government going discretionary. So government has suspended and referred the matter to the committee. So basically effort to curb the media freedom is going on. Fine. Ab next लिखो right the reasonable restrictions which apply on freedom of speech and expression of ordinary citizens, of the citizens, also apply in case of media. Apply in case of media. अब लिखो right, journalists have been subjected to the penalties in context of defamation, sedition, contempt of court, contempt of parliament, right? The lack of codification of privileges also put huge restrictions on freedom of press. On freedom of press. ठीक है, इसमें एक आर्टिकल लिखो, आर्टिकल 361 कैपिटल A. This was introduced by 44th Amendment Act. 44th Amendment Act. So up till now there was no mention of freedom of press type of a thing, but this article does introduce, and it grants protection to the publications which are published under the authority of Parliament. Fine. So लिखो right. It grants protection to the publications under the authority of Parliament and state legislatures. So until and unless Parliament has not banned, if you have published anything related to the Parliament, you will not be punished for that. There is no liability. Until unless it is a secret meeting and Parliament itself has prevented. So in this way, little bit amount of curbing the scope of privileges of parliamentarians has been done. Fine. So this is all as far as the freedom of press is concerned. तो सारी चीज़ें जो otherwise हैं वही apply होती है. तो there was 2-3 years back there were try regulations or guidelines थी that जो press है, press should not be controlled by a single corporate house या in a particular region. All forms of news
channels या all forms of medium of news should not be controlled by one media house. So TRI has suggested that you should fix the share that a particular company should not be owning more than this much share of in a particular region. Suppose let us say it is Tamil Nadu. It should not happen that one publication house is having a share beyond a particular percentage in all sorts of media, जैसे electronic media, print media, decide the share so that one house does not have a monopoly over the news supplied in different forms. Okay, so readers can get the variety of ideas or variety of news so that they can make a balanced opinion. Fine. So these are the things you can keep it in mind in freedom of press. So now let us see other restrictions in India. We have not done defamation. No. So likho right. Freedom of speech and expression and the issue of defamation. Sedition किया था शायद, defamation नहीं किया. Issue of defamation and the issue of defamation. Now what is the issue? It deals with which section? It deals with section 499 and section 500. Likho right. Section 499 and section 500 of IPC. What is the issue? And what was the Subramaniam Swamy case related to it? Issue क्या है? Defamation क्या होता है? Undermining somebody's reputation. Fine. So defamation in India is a civil wrong or a criminal wrong or both? Both. और problem किससे है? Criminal से. तो इस issue में debate क्या है? कि should defamation be treated as a criminal liability? ठीक है? अपने कोर्ट का क्या व्यू है? Defamation should continue as a criminal liability? Yes or no? Why? What is the logic? So you are aware of Subramaniam Swamy case? तो सुब्रमण्यम स्वामी केस में इस इशू को क्वेश्चन किया गया कि डिफेमेशन शुड नॉट बी अ क्रिमिनल लाइबिलिटी. ठीक है. बट सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट right to reputation is a fundamental right under right to life. हाँ भाई, is a and this prescribes the penalty. Fine. Now, defamation in Subramaniam Swamy case, it is a very disappointing judgment by the Supreme Court. And in Subramaniam Swamy case, Supreme Court upheld that defamation should be continued as a criminal offense with criminal liability. Fine. And Supreme Court held that right to reputation is a part of right to life under Article 21. Fine. Now there are contradictions between two rights. Fine. One is Article 19, freedom of speech and expression, and second is Article 21. Fine.
Now Supreme Court's judgment is tilted more towards right to life and does not protect freedom of speech and expression adequately. Whenever two rights come into contradiction, what doctrine judiciary applies? Two provisions of the Constitution come into contradiction with each other. What is the doctrine applied by judiciary? क्या? Letter one क्या? Doctrine of harmonious construction. ठीक है? तो ऐसे इश्यूज में जब दो प्रोविजंस कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई की जाती है. ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं तो वेग, इनका कोई पैरामीटर तो है नहीं. फाइन. तो ये जो जजमेंट है दैट वाज इन फेवर ऑफ राइट टू लाइफ. अब इस जजमेंट में तुमको कोई प्रॉब्लम दिख रही है कि राइट टू रेपुटेशन should be, if somebody tarnish somebody's reputation, that person should be coming under the criminal liability. How do you look at this judgment? अरे भाई, अपना कोई दिमाग, सोच, आइडिया कुछ तो है. मान लो तुम बॉस हो, you are a boss, fine, and she is working under you and you have done some sexual harassment. Okay, fine. Now she goes and complains against you that you have violated the modesty of a woman and all, and sexual harassment. Fine. What will you do? क्या करोगे? क्या करोगे तुम? रिजाइन करो है? क्या करोगे? केस करोगे. कौन सा केस करोगे? मानहानि. यही तो है मानहानि. तो ये मानहानि का केस करोगे. ठीक है, मी टू में पहुंच गए तुम. ठीक है कि मेरी हो गई मानहानि. अब वो है सेक्रेटरी, ऑब्वियसली सैलरी होगी लेस, और तुम हो बॉस. ठीक है, तुम्हारे पास है पैसा, पावर. ठीक है, पैसा है, पावर है, कांटेक्ट है. तो तुम क्या करोगे? यू कैन मूव. और तुम्हारा लॉयर कौन सी लायबिलिटी लगा देगा? क्रिमिनल लायबिलिटी. तो ये क्रिमिनल लायबिलिटी, पर्सन को जेल भी जाना पड़ेगा अगर ये पता चला कि somebody has just tarnished your reputation. ठीक है, और you know that Indian legal system is not that fair. It is in favor of, or it is tilted towards the rich and powerful. ठीक है, तो तुम्हारी पास ये सिचुएशन है to misuse your power and position. ठीक है, अब ये जो क्रिमिनल लायबिलिटी है, एक बार इंसान जेल गया, ये अपने आप में एक फियर है ना, ये डेटरेंट है किसी पर्सन के लिए टू कंप्लेन अगेंस्ट यू. फाइन. बिकॉज जेल गए और बाद में प्रूव भी होता है कि यू वेर नॉट कल्प्रिट, बट वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉर्चर है, एक स्टिग्मा है. किसको किसको समझाओगे कि हम कल्प्रिट नहीं थे? ठीक है, तो एक तरीके से ये जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है दैट इज नॉट जस्टिफाइड. उसके नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, डिसप्रपोर्शनेट है. तो कैसा होना चाहिए? सिविल या एक टॉर्ट लॉ. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉस. ठीक है, तो सिविल लाइबिलिटी अंडर
tort law. That should be what judiciary should be supporting. अब जुडिशरी की पोजीशन सुब्रमण्यम स्वामी केस में रॉन्ग क्यों है? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सप्लिसिटली ग्रांटेड राइट है. राइट टू रेपुटेशन ये जुडिशरी ने डिराइव कर दिया और डिराइव करके इससे भी ऊपर बना दिया. यानी यहाँ पे तो जुडिशरी खुद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के, तो देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन टू पुट अ डाउट ऑन जुडिशरी. For protecting the rich and powerful, there can be a nexus between the judges and the powerful also. तो इसमें blatant miscarriage of justice लगता है कि नहीं? Fine. तो आइडिया क्या होना चाहिए? There has to be a balance that if someone has not committed any crime, his reputation has to be protected, but at the same time the person who has been harassed and all should also be protected. Right? तो जुडिशरी का ये जो अप्रोच है ये कैसा है? इसको बोलते हैं पैटर्नलिस्टिक है. एक्चुअली डिफेमेशन जो फिर आईपीसी कॉलोनियल लॉ है, डिफेमेशन क्यों आया? ये फिर ब्रिटिश ट्रेडिशन है. तो ब्रिटेन में अगेन जो ब्रिटिश हिस्ट्री इफ यू सी, सो अगेंस्ट फ्यूडल लॉर्ड्स एंड ऑल, इफ समबडी बेसिकली मीडिया वालों के ऊपर लगता है ये सारी चीज़ें, जर्नलिस्ट पर, तो somebody criticizing the feudal lords, and feudal lords were in power, so they made it a criminal liability. लेकिन at present in Britain or in any of the liberal country, it is not a criminal liability. Fine. When you retain it as a criminal liability, there are some basic premises you are violating. Basic premise क्या है? What is the difference between a civil wrong and a civil law या civil and criminal? लॉ में डिफरेंस क्या होता है? सिविल जो है वो है टू प्राइवेट पर्सन्स. क्रिमिनल में स्टेट गेट्स इन्वॉल्व्ड. ठीक है. स्टेट कब इन्वॉल्व होनी चाहिए? व्हेन इट हैज समथिंग टू डू विथ सम वाइडर सोसाइटी. ठीक है. अगर वाइडर सोशल गुड कहीं से हार्म हो रहा है तब इम्पैक्ट है. अदरवाइज तो अगर ये दो लोगों का मामला है, मतलब दो पर्सन है, बॉस और सेक्रेटरी, ठीक है, इसमें इससे पब्लिक ऑर्डर कैसे हार्म होता है? तो नॉर्मली क्या होता है, जो भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनके अगेंस्ट जब चार्जेस लगाए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्रिमिनल डिफेमेशन मतलब क्रिमिनल चार्जेस लगा देते हैं, जिससे दैट एक्ट्स एज अ डेटरेंट. इंडिया में एक व्हाट इज द एक्सक्यूज टू कंटिन्यू दैट अ पर्सन मे बी पुअर एंड मे नॉट बी एबल टू पे द मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, सो पुट हिम बिहाइंड द जेल. बट दैट इज नॉट अ बेसिस, बिकॉज क्रिमिनल लॉ में अनटिल एंड अनलेस something impacts the public order, वो भी freedom of speech and expression, three concentric circle का judiciary has its own principle. Either security of state is affected, public order, law and order. Fine. So from all angle, this approach of judiciary appears very arbitrary. अब दूसरी चीज है, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? एक तो दिस सिविल लॉ या टॉर्ट लॉ जो भी है दैट इज नॉट फुली डेवलप्ड, प्लस सिविल क्रिमिनल जो सिविल केसेस हैं दैट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग. क्रिमिनल्स केसेस कंपैरेटिवली आर स्पीडियर, सो वेयर इवन वेयर देयर इज अ स्कोप ऑफ सिविल,
people prefer the criminal route, making state as a party. So basically in all countries how judicial system is evolving. Judicial system is evolving where you are shifting away from criminal liability, and unfortunately we are maintaining this criminal liability as a concept. So it has been suggested maintain और जैसे बहुत सारे केसेस हैं यूएस और इन चीज़ों के, अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है तो थ्रेशहोल्ड रियल कोई इफेक्ट होना चाहिए ऑफ योर रेपुटेशन एंड ऑल, तो जो थ्रेशहोल्ड ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी शुड बी हाई. यहाँ पर क्रिमिनल लाइबिलिटी एक्सेप्टिंग विदाउट एविडेंसेस प्राइमा फेसी केस, तो बहुत सारे प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज ऑल्सो एग्जिस्ट in the way we handle this issue. Have you understood this? Yeah. What is the reason that they are given justified is that they are in part नहीं, इन्होंने बताया ये right to reputation है, that is related to my right to life. ठीक है, तो my right to life और किसी की भी right to life बड़ी important है. तो जुडिशरी ऐसी देती है ना, अगर ढंग से एनालाइज करोगे तो एक के बाद एक गलत जजमेंट्स दिखते रहेंगे. ठीक है, और ये सारी चीजें अभी थोड़े दिन पहले से कुछ ज्यादा हो गई. व्हेन द क्रेडिबिलिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ जुडिशरी इज बीइंग पुट इनटू अ बिग क्वेश्चन मार्क. तो मतलब दोज हु अपोज इट, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल ट्रेंड नहीं है टू कीप इट अ क्रिमिनल डिफेमेशन. राइट टू रेपुटेशन तो जुडिशरी मेड दिस राइट, एंड जुडिशरी का जजमेंट बैलेंस होने के लिए क्या चाहिए था, मेक इट एज अ सिविल लाइबिलिटी एंड द क्रिमिनल लाइबिलिटी, दैट विल क्रिएट द बैलेंस. द जजमेंट इज नॉट बैलेंस्ड. अब ज्यादा क्रिटिसाइज करोगे तो जुडिशरी वाले कर देते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है, तो पहले वो जर्नलिस्ट डिफेमेशन में जाता है, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाता है, फिर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट में चला जाता है, उसका आना जाना. ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना बना रहेगा. ठीक, तो वो छुटते हैं फिर आ जाते हैं, कुछ नहीं मिला तो फिर अर्बन नक्सल, फिर उसके बाद वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वो पहुंचा देती है सरकार. ठीक है, एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ तो वेरी बिग ब्लॉट ऑन इंडियन डेमोक्रेसी एंड द आर्बिट्ररीनेस विद विच इट इज बीइंग एम्प्लॉयड. हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो आई विल गो डिफेमेशन. क्या अरे भाई किसी ने बोला, उससे कुछ सही में तुम्हारा कोई हार्म हुआ, तुम कह दो इसने मेरे ऊपर एलिगेशन. अगर किसी के एलिगेशन में ट्रुथ है तो फिर मतलब ट्रुथ, किसी की रेपुटेशन के बारे में कुछ कहना इवन इफ इट इज ट्रुथ, ये प्रोहिबिटेड है. ठीक है, आप तभी कह सकते हैं जब सम पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्व्ड. तो देयर आर लॉट ऑफ restrictions on criticizing any person who is wrong. तो ये जो defamation, criminal liability, it is being used by the corporate houses, it is being used by politicians against journalists. Fine. So, are you proud of Indian democracy? हाँ? फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं. ठीक है, एंड आर्टिकल 19 और आर्टिकल 22 जैसे पढ़ोगे तो वैसे ही पता चलेगा कि कोई भी मतलब इट्स सो हॉलो है. हाँ, तो ये जो इसीलिए आर्टिकल 499 को रिपील करके या अमेंड करके बनाना चाहिए, लेकिन दे रिटेन इट. हाँ,
जो भी है तो हटाना चाहिए ना. यू हैव टू गिव मोर वेटेज टू द फ्रीडम. रॉन्ग एविडेंस किया तो प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, रॉन्ग एविडेंस तो तुम्हारा तो रेपुटेशन वैसे ही ठीक है, तुम्हारे खिलाफ कोई केस ही नहीं है. बट क्रिमिनल लाइबिलिटी, पुलिस कैन गेट परमिशन from the court on a prima facie basis and can put a person in jail. And you know the state of under trials in India. तो कोई भी anybody who is in power will ensure कि you remain under trial. तो तुम कैसे डरा सकते हो अपने सेक्रेटरी को? ठीक है, जाओ तुम जेल में सड़ना. ठीक है, नहीं तो मैं साथ चलो घूमने. तो तुम्हारा चॉइस है, जेल में रहना है, होटल में रहना है. तो तुम्हारे पास लीवरेज है कि नहीं है? तो लॉ वल्नरेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए. तो ये जो पर्टिकुलर जजमेंट इज नॉट बैलेंस्ड. सो दिस मी टू मूवमेंट मतलब पहले तो हमेशा जर्नलिस्ट और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है. But now this Me Too movement has created a new urgency that government, Supreme Court or government should again rethink of continuing it as a criminal offense. ठीक है, अब लिखो राइट डिफेमेशन. सीधे लिखो सुब्रमण्यम स्वामी केस 2016. राइट टू रेप्यूटेशन 2016 का जजमेंट है. राइट टू रेप्यूटेशन इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ and a reputation cannot be allowed to be crucified on the grounds of freedom of speech and expression. ठीक है, अब लिखो क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द जजमेंट. इसमें पॉइंट नंबर 1 इज द वे defamation laws are applied in India right, it has become the first refuge, refuge, refuge of the powerful. Refuge of the powerful. Fine. Point number 2, right, defamation in India not only invite civil liability but also criminal liability. Right, under section 499 it is a criminal offense. And under section 500 there can be a imprisonment up to 2 years with or without fine. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट
लिखो राइट, द ग्लोबल ट्रेंड इज द शिफ्ट फ्रॉम criminal liabilities towards civil liabilities. अब नेक्स्ट लिखो राइट, इट इज अ colonial legacy to protect the elite, right? In Britain, it was meant for protecting the lords. Next, Supreme Court's approach in Subramaniam Swamy case favors paternalism rather than freedom. Next, above judgment cannot be seen as a harmonious construction between Article 19, harmonious construction between Article 19 and Article 21. Right? The decision is tilted towards Article 21. Right? Right to reputation. A derived right is given primacy over the explicit right. ठीक है, right? In case, next point, in case Supreme Court had limited defamation to only civil offense, it would have balanced both the fundamental rights. ऊपर से ऐसे लोग, उनकी रेपुटेशन का कोई फायदा है? एमजे अकबर टाइप, जिस इंसान की रेपुटेशन होनी नहीं चाहिए उसकी रेपुटेशन तुम प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है? तो रेपुटेशन का मतलब समझ में आ रहा है इन लोगों को, ठीक है? अब नेक्स्ट लिखो, तो दे शुड हैव मेंटेन्ड इट एज अ सिविल, दैट्स ऑल, फाइन. So basically it goes against the defamation, it goes against the vulnerable sections. Fine. Up next लिखो right, it also goes against the fundamentals. It also goes against the fundamental premises of criminal law. ठीक है, अब इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, राइट? सिविल लॉ deals with
the dispute between two private persons Point number 2, criminal law involves the state, इसी मिल को full stop right, criminal law involves a state because the matter may have importance for the wider society. Next लिखो right. अब लिखो why, what is a justification for maintenance of criminal defamation? What is the justification for continuation of defamation? Defamation as a criminal offense. First तो है right to reputation. Second, poverty. देखो right, in India, people may not be able to pay monetary compensation. Monetary compensation. Right, hence criminal liability is to be maintained. इसका कोई लॉजिक? ठीक है, अब लिखो राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ. इट इज बिलीव्ड दैट tort law, TORT, tort law in India is not, tort law in India is not fully developed. Right, hence criminal law takes prominence. ठीक है, next, similarly the justice delivery system is extremely slow. Right, hence people prefer to go for the criminal liabilities where the resolution is faster. Next, in India, the right inverted commas threshold limit to invoke criminal penalties, in case of defamation has been too low. Right, USA's Supreme Court in New York Times versus Sullivan case. New York Times versus Sullivan case, 1964,
has held that there should be very high threshold right. It means when the objective can be proved as having real malified intentions to harm somebody's reputation. Malified intention to harm somebody's reputation without any fact. Right, एक class लिखो, right. Hence it is said that the continuation of criminal liabilities is a compensation of deep institutional failures. Deep institutional failures in India. Deep institutional failure, basic institutional failure है, law of tort develop नहीं है और speedy disposal नहीं है, तो लोग criminal उसके लिए चले जाते हैं. Fine. Tort law मतलब दो लोग, ऐसे कई चीजें हैं जो डिफाइंड नहीं है, ठीक है. तो अब टॉर्ट लॉ, सपोज समबडी हैज हार्म्ड यू, या तुमको लगता है किसी तरीके से हार्म है, तो तुम खुद से बता सकते हो. हर एक लॉ नहीं दिया हुआ है. किसी ने मान लो तुम्हारा रबर बैंड चुरा लिया, ठीक है, अब उसके लिए अगर कानून में नहीं है लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो उसके तुम जा करके कंपनसेशन वो कर सकते हो. तो ऐसे जो रेजिडुअरी मैटर्स हैं वो सब टॉर्ट लॉ में आते हैं. स्टेट नहीं, पर्सन. मतलब स्टेट ने मुझे डिफेम किया, स्टेट तो नहीं, लेकिन कोई तो पर्सन होगा ना, कोई पुलिस ऑफिसर होगा या कोई तो होगा ना. स्टेट के अगेंस्ट कैसे? अगेंस्ट सम ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो वो हेड है वो लायबल होगा. पर्सन के अगेंस्ट लगेगा ना, स्टेट तो कुछ नहीं है. और स्टेट को मान लो पनिश कैसे करोगे? स्टेट को पनिश तो तुम सेक्रेटरी को ही करोगे या जो भी कुछ करोगे, तो वो नहीं हो सकता. फाइन. अब नेक्स्ट लिखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन and contempt of court. So contempt of court is also a restriction on freedom of speech and expression. How? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कोर्ट की बात नहीं मानना. कंटेम्प्ट दो तरीके का होता है, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल. व्हेन वी डू नॉट इम्प्लीमेंट द लॉ ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, देन इट इज सिविल. एंड व्हेन वी ट्राई टू ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, its process of dispensing justice, or we try to undermine the prestige of court, then it can lead to criminal contempt. Fine. Now constitutionally, Supreme Court and High Court, Constitution में ही ये mentioned है that they are the court of records.
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को एक हायर लेवल कोर्ट्स होते हैं, उनकी जो प्रेस्टीज है, दैट इज वाई टू मेंटेन देयर प्रेस्टीज देयर इज अ सिस्टम टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. फाइन. अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर ऑफ अ हायर जुडिशरी, it can utilize its power for the lower judiciary, subordinate courts also, because it comes under their jurisdiction, yeah, it becomes their administrative liability and all. तो contempt of court है. Now contempt of court के context में what can be a punishment etc. that parliament may by law can determine. So Parliament has made a law in 1971. उसको recently amend भी किया गया to minimize the negative impacts of contempt of, मतलब it should not be misused. Now the issue is contempt of court has been used by judiciary in some scenarios which cannot be called as justified. तो सबसे पहले फिर है against the journalists because of the criticism of some judgment. ठीक है, तो अगर fair criticism of judgment also judiciary thinks is wrong or is something which has to be punished, so that is, or sometimes some corrupt judge and you do some reporting. So judiciary also, besides defamation, judiciary can also use contempt of court. So there have been wrong uses of contempt of court. Fine. So contempt of court is also a big challenge to the freedom of speech and expression. Fine. So what is to be done? Contempt of court should be retained, but the manner in which judiciary will exercise it or the situations in which judiciary will exercise it have to be improved or have to be amended. तो उसके context में judiciary itself has given certain guidelines. This is a very famous case. You know the case? It's a Mulgaonkar case. In that case, judiciary has given certain guidelines with respect to contempt of court. Fine. So this is what you are, and then there are some additions have been made by bringing an amendment to reduce the problem. So contempt of court, if you are a journalist, contempt of court is also a way to restrict your freedom. Second thing is parliament's privilege, and parliament to punish for its contempt is also there. तो अब पार्लियामेंट ने लॉ बना करके जुडिशरी वालों का तो कंटेम्प्ट थोड़ा सेट कर दिया, लेकिन अपने वाले में पूरा डिस्क्रिशनरी सिचुएशन मेंटेन करके रखा है. ठीक है, तो वैसा सिस्टम है अपने देश में. लिखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. शुड देयर बी नो फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरीज जजमेंट्स? होना चाहिए कि नहीं? ठीक है. और हाउ डू यू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट? बाय स्टॉपिंग द फेयर जजमेंट और एक्सेप्टिंग द फेयर जजमेंट. तो ये बात जुडिशरी को समझानी पड़ेगी कि आपकी डिग्निटी तब कम नहीं होती है जब लोग जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. डिग्निटी तो तब लोअर होती है व्हेन योर एक्ट अपीयर्स इररेशनल. ठीक है, अब लिखो यहाँ. वो तो जज कर सकता है. और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब इंस्टीट्यूशन पे. कोर्ट का कंटेम्प्ट हो गया, पार्लियामेंट का कंटेम्प्ट हो गया. तो पहले तो वो इंसान बोलेगा, उसको पहले सोचना है कहीं हेट स्पीच तो नहीं, फिर ये सेडिशन तो नहीं, फिर ये डिफेमेशन तो नहीं, फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं.
ठीक है, फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं, फिर ये ब्लास्फेमी तो नहीं, ठीक है। तो ये सोचने के बाद बेस्ट है पेज 3 के जर्नलिस्ट बनो, ठीक है, तुम्हारा कांटेक्ट भी रहेगा, तुम्हारी लाइफ भी अच्छी रहेगी। तो वही तो आयरनी है इंडिया की डेमोक्रेसी की। हाँ, तो वही चीज वी वेर अपोजिंग व्हाट ब्रिटिश वेर डूइंग, बट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज मोर ड्रैकोनियन। और कुछ भी नहीं मिला तो फिर क्या है, आर्टिकल 22 है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में तो यू कैन नॉट बी अप्रोचिंग टू द सुप्रीम, यू विल नॉट बी अलाउड टू अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। तो रियल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वेरी नॉमिनल। और बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के डेमोक्रेसी का कोई सेंस ही नहीं। नाउ यू रियलाइज हाउ मच डेमोक्रेटिक वी आर। अब जैसे ये है, पीएम को क्रिटिसाइज कर दिया जर्नलिस्ट ने, तो तुम जाओ जेल, ये कोई तरीका है? दिस इज अ ब्लैटेंट मिसयूज ऑफ योर पावर, ठीक है। हाँ चलो एनीवे, गो टू नेक्स्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू। लिखो, एज पर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, 19 क्लॉज 2, contempt of court can be a basis to limit the freedom of speech and expression. Next, under the Constitution, Supreme Court as well as High Court are court of records and have been given power to punish for its contempt. Punish for its contempt, right? Parliament has brought the Contempt of Court Act 1971, right? It describes point number 1, civil contempt, which means willful disobedience to law, willful disobedience to the order of the court. Ab criminal contempt, right? Any action, ब्रैकेट में लिख दो, any work or publication which lower downs the prestige of the court, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडरमाइन मतलब अंडरलाइन करो, नॉट अंडरमाइन, ठीक है, प्रेस्टीज ऑफ द कोर्ट अंडरलाइन कर दिया, राइट, राइट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्शंस विच ऑब्स्ट्रक्ट
the administration of justice. Which obstruct the administration of justice. अब लिखो why contempt of court should be a offense. Right? To maintain faith in the judicial system. अब लिखो what is the controversy? Right? It has been exercised in the manner which has created chilling effects, chilling, chilling effects on freedom of speech and expression. Right? Right. Many journalists have been put behind the bars. Behind the bars, even for the fair criticism. Right? It has been used to protect corrupt judges also. अब लिखो राइट what should be done. अलाउड तो है तो इन्हें फेयर लगे तब ना. जो जर्नलिस्ट को लग रहा है फेयर है, जर्नलिस्ट बोलेगा हमने तो फेयर क्रिटिसिज्म किया है, जुडिशरी बोलेगी नहीं किया है. हाँ तो वो कह देंगे नहीं फेयर. ठीक है. क्रिटिसिज्म से क्या प्रॉब्लम है? अगर हम क्रिटिसिज्म करते भी हैं तो जो लोग हैं वो तो समझेंगे कि क्रिटिसिज्म इज फेयर और नॉट. तो देयर इज नो पॉइंट सप्रेसिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. जुडिशरी की प्रेस्टीज मान लो उससे कोई, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट. अगर तुमने जजमेंट कोई गलत दिया है और बाकी लोग सफर करें, इससे अच्छा है कि यू रिव्यू योर जजमेंट एंड चेंज इट. ठीक है. तो मेन चीज है कि यू आर वर्किंग ऑन द रॉन्ग प्रीमाइसेस. कि जुडिशरी का पर्पस जुडिशरी की प्रेस्टीज को बचाना नहीं है. इट हैज टू सी दैट नोबडी सफर्स बिकॉज ऑफ द रॉन्ग जजमेंट एंड एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म. अगर इनफैक्ट क्रिटिसिज्म इज नॉट फेयर देन ऑल्सो इट्स ओके. और असलियत में इफ इट इज अ लिबरल डेमोक्रेसी, if anybody has done political theory will understand that for rights and liberty toleration is the essence. फिर J.S. Mill की जो freedom of speech की theory है उसके ऊपर ये सारे rights based हैं. तो what he says, if somebody makes my wrong criticism, he will understand, and if his criticism is right, I have an opportunity to correct myself. That is why when a freedom of speech and expression is suppressed, you are robbing the generation from their right. Fine. So every right judgments are based on all these philosophies. तो कोई criticism का कोई sense ही नहीं है. Until unless that person is obstructing the administration of justice, that person is not following the law, then तो judiciary doesn't do anything. जैसे अब कावेरी वाला ट्रिब्यूनल है, जुडिशरी कीप्स ऑन डूइंग
कि implement करो and government keep on doing contempt and then you don't take any action. Fine. तो now क्या लिखा है हम लोगों ने? What should be the approach? What should be the approach या what should be done? कोर्ट को इच्छा है तो कर देंगे, उससे कुछ नहीं लेना देना है. कोर्ट को लगा कि हमारा क्रिटिसिज्म गलत है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया ना. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इफ साबरीमाला जजमेंट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है. तो होंगे ना बहुत सारे केसेस, ठीक है, कोर्ट में फाइल हुए होंगे 1000 केसेस. ठीक है, अब कोर्ट में क्या है, जो वो भी जुडिशरी के ऊपर है, कौन से केसेस अनटिल अनलेस डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. अब और डायरेक्टली दैट पर्सन तो पीआईएल तो जो डिस्क्रिशनरी है, कब ये एडमिट करेंगे, कब ये रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, तो वो तो एक अलग ही इशू है. फिलहाल इसका करना, व्हाट शुड बी डन लिखो. राइट, यहाँ पे लिखो. राइट, justice cannot be a cloistered virtue. Cloistered, C-L-O-I-S-T-E-R-E-D, cloistered virtue. फिर लिखो. राइट, Caesar's wife should be above suspicion. मतलब public authorities will always be come under a scanner and they should be above suspicion. If you put restrictions, then obviously there is a scope for suspicion. And cloistered virtue means what? It is not sacred that no one can touch. ये कोई साबरीमाला श्राइन नहीं है. Have you understood this? साबरीमाला श्राइन में जो गॉड है, वो कंसेप्ट है cloistered virtue का, that you cannot touch, you cannot pollute. जुडिशरी के लिए नहीं कहा जाता कि ये इट्स अ cloistered virtue. ठीक है, फिर लिखो. राइट, द मैजेस्टी ऑफ कोर्ट इज मेंटेन्ड not when there is a fair criticism, sorry, is maintained not when fair criticism is prohibited. Rather when it is accepted. It is accepted. So right, the misuse is not majesty. But the despotic assumption of infallibility. Despotic assumption of infallibility. So who is infallible? God. Everyone is fallible. ठीक है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, ये स्टेटमेंट आया था, साइलेंसिंग इज एन assumption of infallibility, and this is like you cannot be wrong. Then your prestige goes much down, rather than when you accept that I may be wrong. Have you understood this? अब लिखो. राइट, judiciary itself has prescribed
certain guidelines in 1978 to be followed by the courts in S. Mulgaonkar case. क्लास में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. स्टार स्टार कौन दबा रहा है यहाँ? क्यों? कॉपी करने के लिए. एनीवे, चलो मुलगांवकर केस. इसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं? राइट. Power to be used when the attack is a calculated one to obstruct or destroy the judicial process. Next, to be used in harmony with freedom of speech and expression. Next, judges need not to be hypersensitive. Next, totality of the case is to be seen. Is to be seen. Total circumstances देखने. Next, the power is given to protect the dignity of judiciary and not for protection of ERRING, erring judges. Erring judges. Right. Next, judges cannot be immune to criticism. Judges cannot be immune to criticism. Immune to criticism, but criticism should not be done in a manner to lower down the prestige or public confidence in the system. Public confidence in the system. Now you write, in 2006, Parliament had amended the law and mentioned that and added that point number 1, action will be treated as a contempt
treated as a contempt when it interferes in the administration of justice, substantially. Next लिखो, truth is a valid defense. Truth is a valid defense. ठीक है, अब इसमें लिखो comparison with defamation. Comparison with defamation laws. Right? In case of defamation, which can lead to criminal liability, comma, truth itself is not defense. Truth itself is not defense, right? It must involve some public good. मतलब तुमने किसी के अगेंस्ट एलिगेशन किए, that allegation are correct, still you have harmed that person's reputation. ठीक है, allegation लगाए, allegations are correct, plus this allegation is impacting some wider harm of the society, then you are immune from the offense, otherwise not. So it is an irony. Fine. So these are the major restrictions on freedom of speech and expression, the most fundamental of all freedom. Yeah, another issue is very important, right? The issue of parliamentary privileges. The issue of parliamentary privileges and freedom of speech and expression. ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इशू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. और प्रीलिम्स में दो केस, इससे रिलेटेड केसेस इम्पोर्टेंट है. फाइन. और इन प्रीलिम्स दे कैन आस्क द क्वेश्चन, what will have priority, privileges or fundamental rights. ठीक है, तो ये क्वेश्चन यू शुड बी नोइंग. आई विल डिस्कस विद दोस. दो केसेस हैं, एक सर्च लाइट केस है. ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो नाउ privileges. Privileges you understand under article 105. ठीक है, and similarly for state legislatures there is a provision for privilege of parliamentarians. Fine. Now among the privilege of parliamentarians, freedom of speech and expression is supposed to be the most important privilege. Now the parliamentarian on the floor of the house can defame anybody. ठीक है, except judiciary. Judiciary और इनका अपना अंडरस्टैंडिंग, तुम हमें नहीं करोगे, हम तुम्हें नहीं करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, लेकिन बाकी प्लस मेन इशू इज व्हाट इन इंडिया, privileges are not codified. When privileges are not codified, then it becomes difficult for judiciary to protect the freedom of speech and expression. और जो privilege है, privilege comes in contradiction with freedom of speech and expression. अब privilege unlimited है, anything can become privilege.
And if any journalist does something which parliament or parliamentarian think is attacking its privilege, they can issue the contempt of parliament and a person can be punished. तो फिर वही है, अगर fair criticism of parliamentarians, then also there can be lowering of the prestige. Okay, so it is a high time that privileges should be codified. Main issue when we discuss this, the main thing is codification of privileges. Fine. So now privilege issues, likho right. Under Article 105 and Article 194, 194 MPs and MLAs enjoy privileges, ठीक. अब लिखो what is the issue, what is the issue, right? Constitution only mentions freedom of speech and expression as a privilege, comma, rest of the privileges are not codified. Rest of the privileges are not codified. ठीक है, अब लिखो what is the impact. Right, lack of codification creates uncertainty. Right, it restricts the freedom of speech and expression and in particular freedom of press. अब लिखो why. Right, the violation of the privilege can lead to the view that it has resulted into contempt of parliament. Even violation of privilege itself is an offense, and contempt of parliament. ठीक है. Now right, it is suggested that privileges should be codified. अब लिखो why it should be codified. Right, at least journalists will know their limits, what they can write, what they cannot write. Next, it will also be relevant for judiciary because judiciary is supposed to be the protector of fundamental rights.
protector of fundamental rights, so it can perform its duty. Up next लिखो right, however parliament or any of the state legislatures have not attempted the codification. Right, it is said that not to codify privileges in itself is the biggest privilege of parliament. कि कोडिफाई करेंगे नहीं, कोई चीज खराब लगी या लोग उस डर से कुछ कहेंगे नहीं, is itself a privilege. अब जुडिशरी के पास दो प्रॉब्लम है. जुडिशरी हैज टू enforce the constitution, तो आर्टिकल 105 is also a part of the constitution. Fundamental rights is also a part of the constitution, and whenever the two provisions contradict, judiciary should go for harmonious construction. Fine. तो अब जुडिशरी के लिए आसान हो जाएगा कोडिफिकेशन करके, that arbitrariness will go. Fine. अब लिखो what is the relationship between privileges of parliamentarians, what is the relationship between privileges of parliamentarians and the fundamental rights of citizens. ठीक है, तो which one will be given primacy? Fundamental rights. ठीक है, तो तुम लोग जो भी सोचो उसका हमेशा उल्टा बोलो. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर नहीं है प्रिविलेजेस के, क्योंकि प्रिविलेज इज प्रिविलेज. राइट तो सबको होता है, प्रिविलेज किसी किसी को होता है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो प्रिविलेज इज सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिविलेज में जुडिशरी विल गिव प्राइमेसी टू प्रिविलेज. ठीक है, दिस केस इज नोन एज सर्च लाइट केस. ठीक है, तो फिर वही है, फ्रीडम ऑफ प्रेस सर्च लाइट वॉज सम लोकल पेपर इन बिहार, or that editor was punished for the violation of the privilege. After that, judiciary has changed its approach. How judiciary has changed its approach? That there's a case from UP. पहला था बिहार का. ठीक है, दूसरा है यूपी का. यूपी में अगेन लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पनिश्ड द जर्नलिस्ट फॉर राइटिंग समथिंग अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द हाउस. नाउ दे अप्रोच्ड टू द हाई कोर्ट. तो इन हाई कोर्ट, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और पार्लियामेंट ने ऑर्डर दे दिया था कि दे शुड बी पुट इन द जेल. फाइन. सो दे अप्लाइड फॉर हेबियस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 21 फॉर, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 21. तो जजेस हैव ग्रांटेड देम द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, दैट नाउ पुलिस कैन नॉट अरेस्ट देम. So when assembly heard the action of the judges, तो assembly को लगा कि मेरा और contempt हो गया. तो assembly ordered the police that judges have done the contempt of parliament and intern them, detain them. Then judges reached to the Supreme Court. ठीक है भाई.
भैया स्पीकर ने बोला जज ही को बुला लो यहाँ पे, ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी अकल आई, तो सुप्रीम कोर्ट देन मेंशन दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यू हैव टू मेंटेन द हार्मनी एंड not other but article 21 will have priority over the privileges, ठीक है। और मान लो अगर असेंबली ने बोला होता सीजेआई को पकड़ लो, ठीक है, तो सीजेआई बोलते privileges have no relevance, ठीक है। तो ऐसा मतलब विदाउट प्रिंसिपल दे वर्क। तो बेसिकली प्रीलिम्स के लिए यही बस पता होना है कि प्रिविलेज और फंडामेंटल राइट्स में विच विल हैव प्राइमेसी, ठीक है। तो हियर यू राइट फर्स्ट केस। फर्स्ट केस लिखो, पहला है सर्च लाइट केस। सर्च लाइट केस, सर्च लाइट, ये सर्च कर रहे थे, ठीक है। Searchlight case, ठीक है। This case is actually M.S.M. Sharma versus S.K. Sinha. Sharma versus Sinha. M.S.M. Sharma versus S.K. Sinha case. Here, I'll see. You write and just see. Sharma versus Sinha case. To write right privileges will have primacy over the fundamental rights. 50s के आसपास का केस है, बट एग्जैक्ट डेट आई डोंट नो, ठीक है। अब नेक्स्ट केस लिखो, राजा रामपाल वर्सेस राजा रामपाल, RAMPAL, राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर, Honorable Speaker, Legislative Assembly and others. बताओ ये ऑनरेबल थे, ठीक है। ये कुछ 2000 के आसपास है, यू कैन सी द केस। राइट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स given in Article 20 and 21 will have supremacy over the privileges. 20 and 21 will have supremacy over the privileges. ये वाला, हाँ, only these two will be given primacy की, ऐसे नहीं किसी को arbitrarily arrest कर लिया, ठीक है। rest will not have supremacy, मतलब freedom of speech and expression is still limited to the privileges, right? लेकिन किसी को तुमने कहा कि they have impacted or they have harmed the privilege, तो प्रिविलेज हार्म तो किया, अब उसका पनिशमेंट, तो पनिशमेंट कर दिया। तो पनिशमेंट में आर्टिकल 21 क्या कहता है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द ड्यू प्रोसीजर। तो इसलिए मतलब इफ आर्बिट्ररी अरेस्ट देन आई शुड हैव ऑल द राइट्स टू प्रेजेंट माय केस। हाँ, तो मेन चीज ये है कि इफ असेंबली हैज ऑर्डर्ड the detainment, then the person can approach to the Supreme Court under Article 32. What will be the ground? Violation of
20 and 21. तो not the violation of 19. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो राइट, ऐसे शॉर्ट में लिखो NCRWC, नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. NCRWC. You know what is it? National Commission for the Review of the Working of the Constitution. ठीक है. Has favored the codification of privileges. Has favored the codification of privileges in the interest of freedom of speech and expression. In the interest of freedom of speech and expression. फिर नेक्स्ट लिखो श्रेया सिंघल केस. श्रेया सिंघल केस. अब इन श्रेया सिंघल केस the issue was law was ambiguous. Ambiguous है तो huge scope of discretionary power. तो in that case Supreme Court said ambiguity itself cannot be accepted because it will have a chilling effect. तो जो privileges हैं वो भी ambiguous है. You have not codified. तो even if you apply Shreya Singhal case, then also privileges का जो judgment है और इनका that contradicts each other. ठीक है. अब लिखो श्रेया सिंघल केस राइट. If law is not clear and precise, it has chilling effect on freedom of speech and expression. ठीक है. Full stop. Right. Right. Since privileges are not codified, since ये तो मतलब श्रेया सिंघल केस में नहीं, अपने से you can give reference that since privileges are not codified, it goes against the principles pronounced by judiciary. In the above case. Just last restriction लिख लो, blasphemy laws. Blasphemy, BLASPHEMY, blasphemy laws. ब्लास्फेमी लॉज भी डेमोक्रेसी में कोई रेलेवेंस नहीं होना चाहिए इन चीज़ों का. ब्लास्फेमी लॉज राइट अंडर सेक्शन 295 डैश करके लिखो. इट इज अ क्राइम टू डिफाइल, DEFILE, DEFILE, defile or harm the place of worship, or harm the place of worship. उसको नुकसान और कुछ भी करना. नेक्स्ट सेक्शन 295 कैपिटल A. ये दोनों आईपीसी के सेक्शन 295 कैपिटल A. इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस टू हर्ट और इंसल्ट the religious sentiments, religious sentiments.
Now again, something you have written, how it hurts, it is all again subjective. So it again has a chilling effect on freedom of speech and expression. Have you understood this? This has also a negative effect. Negative effect in the sense that maybe some customs and traditions are present in the book or in the religion which are not rational if we see in present times. If you criticize, this will amount to insult to the religious beliefs of somebody. Fine. So this itself creates a huge scope for those who are in power to use it against the opponents. Fine. अब इसी में लिखो राइट the recent controversy related to the action of government of Punjab it has passed a law adding section 295 AA, मतलब in case of state of Punjab 295 AA, right, dash करके लिखो, right, if any action defiles any religion, defiles DEFILES, defiles any religion, मतलब वो चार ही शायद religion है उसमें, or destroy the religious scriptures, you can simply write in bracket, इसको sacrilege law. So basically Guru Granth Sahib and their pages etc. are found to be destroyed and all. So sacrilege law, right, it can invite life imprisonment. So earlier this law was written by the president because it was meant only for Guru Granth Sahib. So one objection was that you have to go for equal treatment of all religion. So now they have included Gita, Quran, Bible also. Fine. And right now it is pending because they have a Congress government and at the center it is BJP government. But according to the experts, पहली बात तो है that this punishment is disproportionate. Fine. And there is a scope for misuse. ठीक है. So you can yourself harm a particular scripture और अपने enemy के bag में रख दिया. ठीक है. The police can again accuse that person. So scope of misuse is so much, and it has nothing to do with the religious sentiments. It is again politically motivated actions, and it will increase the use of religion in elections and politics. And in our society, if you see, the fundamental duty of the citizens is to develop the scientific temper, to accept the fair criticism. Again, this will promote the fundamentalist and orthodox sections will be strengthened more, and there are so many reports by many researchers and all, especially even among the Sikh communities, that these type of actions or these type of system that prevent a lot of research in the religious literature also, if you will not allow any fair criticism, and this is again very subjective. Fine. So these are freedom of speech and expression. Fine. So I think most of the issues we have done. Fine. So what is the state of freedom of speech and expression in India, and what is the importance?
And what are the main controversies? So how far, what is the status? It is very weak status as far as the most important of all fundamental rights is concerned. So now let us see other rights in Article 19. The other rights, there is no need because not much discussion. Yes, within freedom of speech and expression, you can write another question which is important from prelims point of view, that is right to protest. In freedom of speech and expression, ठीक है, इसमें लिखो right to protest. Freedom of speech and expression से related right to protest. अब लिखो, is right to protest a fundamental right? Right to protest is a fundamental right. Is it a part of freedom of speech and expression? ठीक है, अब इसमें लिखो राइट इन रामलीला मैदान केस. Supreme Court has clarified that peaceful protest is the fundamental right. Right, next paragraph. Recently, NGT orders have been declared void by the Supreme Court and has reiterated that citizens have fundamental right to peaceful protest, but it is not an unhindered right. It is not an unhindered right. Right? Government can frame, not a unhindered या unlimited right नहीं है. Government can frame rules in sensitive zones. Rules in sensitive zones. So government can provide you some spaces, वहाँ जाके you can go and protest. You cannot assert that I will protest everywhere. ठीक है? नहीं तो वो तो तुमको दिखाना पड़ेगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, पब्लिक ऑर्डर में ही कर सकते हो. ठीक है, तो राइट टू प्रोटेस्ट. अब नेक्स्ट यू कैन राइट राइट टू स्ट्राइक. ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है. राइट टू स्ट्राइक. राइट, इज इट अ फंडामेंटल राइट? लिखो राइट. Right to strike is a statutory right. It is a statutory right of the trade unions, under Industrial Dispute Act. Under Industrial Dispute Act, which is given for them to bargain.
on behalf of employees, to bargain on behalf of employees. केस लिख लो धर्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2004. धर्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2004. अब लिखो राइट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डज गवर्नमेंट सर्वेंट्स और do government servants have legal right to strike? Government servants have legal right to strike. लिखो राइट. राइट. T.N. Rangarajan versus State of Tamil Nadu. T.N. Rangarajan versus State of Tamil Nadu 2003. T.N. Rangarajan versus State of Tamil Nadu 2003. Right? Government servants have no legal right to strike. अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट राइट, इन हरीश उप्पल, हालांकि इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट और लेबर्स वाला इंपॉर्टेंट है, बट यू कैन राइट इन हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2003. हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2003. इवन लॉयर्स आर डिनाइड राइट टू स्ट्राइक, जबकि ये तो प्राइवेट पर्सन है. इवन लॉयर्स आर डिनाइड राइट टू स्ट्राइक. नेक्स्ट, इन CPIM वर्सेस भरत कुमार केस. CPIM वर्सेस भरत कुमार केस 1998. It has been clarified that there is a legal right to strike, but no right to band. BANDH, band. BANDH, बंद. बंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लॉकआउट, शट डाउन, लॉकआउट. और हड़ताल, स्ट्राइक. ठीक है. बंद बिकॉज यू आर फोर्सिंग अदर. ठीक है, यू हैव योर ओन राइट टू सिट ऑन द स्ट्राइक, बट यू कैन नॉट कंपेल अदर्स. सो दैट इज, you are restricting somebody else's freedom of speech and expression. Right? Does freedom of speech and expression include right to information? Yes, because without right to information, you cannot have, to make the right opinion, right speech, you should also have right to information. अब बाकी कोई राइट इसमें काम का नहीं है. ठीक है, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स. लेकिन इसमें प्रीलिम्स में व्हाट क्वेश्चंस कैन कम? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. बट प्राइमरली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस विल कम रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू टू मेक अ टेबल, और कौन कहाँ से अलग है बस उतना जानना है. ठीक है, क्या खत्म कर दिया?
स्ट्राइक तो चलता रहता है, कोई इशू नहीं, कानून है, लेकिन इंडिया क्या है, कानून इम्प्लीमेंट हो जरूरी नहीं। इंडिया को क्या कहा जाता है, सॉफ्ट स्टेट। क्यों? क्योंकि लॉ इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं, लॉ लेकिन है सब, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मत सोचो कि लॉ है तो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, ठीक है। और तुम्हारा अगर जुगाड़ हुआ तो तुम कर सकते हो बंद बंद, कोई फर्क नहीं। यहाँ तो सीएम लोग खुद कर लेते हैं, सीएम ऑफ कर्नाटका या गवर्नमेंट के लोग ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो दैट मेक्स इंडिया सॉफ्ट स्टेट। तो आई डोंट थिंक टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका बस वही रेस्ट्रिक्शन आता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द population and all, to reside and settle in any part of the territory, to practice any profession, to carry on any occupation, trade or business, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड जो नया लॉ ऑन सरोगेसी है, that can be asked but only in mains. तो now surrogacy, what are the features of the new law on surrogacy? You have done in current affairs. Okay, no commercial surrogacy, no single parents, homosexuals, मतलब no, it is not allowed, ठीक है। तो फिर सेक्शन 377 says, is it not contradictory? हाँ, क्या 5 साल बाद? वो तो फैमिली, मतलब there are restrictions, तो बस ये लिख सकते हो, you can just write the salient features of new surrogacy law. इंडिया तो बन गया था सरोगेसी कैपिटल, एंड द डॉलर बिलियन, मतलब कितना बिलियन डॉलर का वो बिजनेस था, एंड बट इट वाज लाइक अगेन मिसयूज ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस था, बिकॉज द प्राइवेट क्लिनिक्स, they were not following the guidelines prescribed by the Medical Council of India, and those who were being used as a surrogates, their protection was not there, neither in terms of any sort of insurance nor any types of regulation. There was a huge impact on their health, and it was misusing of the circumstances. And there have been cases in the past where suppose the parents are from some other country like Germany, they have the citizenship laws which are very tough citizenship laws. So in Germany, the citizenship is only when the mother is the citizen, natural citizen. So that created the problem about with respect to many such children also. Fine. So in that context, there was a demand for regulation. So this particular bill, so you can just write, maybe current affairs may will cover. So surrogacy law, what are the features? First, commercial surrogacy is banned. Next, it bars single parents, homosexuals, living in couples, next it will be permitted only when, point number 1, right, the 5 years of marriage, 5 years of marriage are complete, ठीक है, and doctor certifies, तो डॉक्टर से सर्टिफिकेट तो ऐसे भी मिल जाता है, शाहरुख खान वाले लोग तो ले ही सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, सब बेकार कानून बनाते हैं। फिर नेक्स्ट,
only, right, the woman should be the relative, woman should be the relative, married, and should have already a biological child. I think मतलब चाइल्ड हो चुका हो, मैरिड है, अनमैरिड को अलाउड नहीं, मतलब इट यू कैन नॉट मेक इट अ प्रोफेशन. ठीक है, बाकी आई डोंट थिंक वी कैन. नहीं, वो तो इसमें दिया हुआ है ना आर्टिकल 21 में, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन. तो इसके लिए स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो है ये, मतलब स्टेट कैन make any law for regulation and control of any trade, business, industry, etc. So now Article 20. कंपनसेशन क्या लेना है, फैमिली का कोई होगा रिलेटिव, और एल्ट्रुइस्टिक रीजन से ही कर सकते हो, कॉमर्शियल रीजन से नहीं. कंपनसेशन के लिए करना ही नहीं है, एल्ट्रुइस्टिक फैमिली का ही कोई अलाउड है, तो तुम उस कपल के लिए कर रहे हो जिससे तुम्हारा कोई फैमिली या रिलेशन है, तो तुम एल्ट्रुइस्टिक पर्पस से कर रहे हो. लेकिन फिर भी क्या कोई इसमें भी ये लूप होल्स है. इंडिया में कोई भी कहीं से रिलेशन बना देगा, ठीक है, और अंडर द टेबल हो जाएगा, तो सब बेकार का सिस्टम. चलो बताओ. हाँ तो उसके लिए एक और केस है, लॉयर्स का भी तो घर चलेगा, सारा एक ही में समझा दोगे. पर्पसफुली एम्बिगुअस लॉज बनाए जाते हैं, हाँ, जिसके लिए फिर एक कानून आए, फिर लॉयर का घर चले. और मोस्टली लॉयर्स बहुत सारे होते हैं एमपीज, तो वो अपना भी खाना खर्चा आगे का देख के बनाते हैं कानून. ठीक है. अब नेक्स्ट इज आर्टिकल 20. अब आर्टिकल 20 में ऐसा कुछ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो खास है नहीं. यू मस्ट बी नोइंग आर्टिकल 20. क्या है आर्टिकल 20? प्रोटेक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन. किस सिचुएशन में होता है ये? व्हेन कन्विक्शन प्रोसीडिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट अ पर्सन इन अ कोर्ट. फाइन. तो इज दिस अ restriction only on executive or is it a restriction also on judiciary? Can there be a restriction on judiciary? Yes. यही तो there are so many restrictions on judiciary. This is also one of the restriction on judiciary. क्या क्या judiciary के restriction है? No ex post facto law. Fine. No double jeopardy and वो तो जुडिशरी से ज़्यादा मतलब पुलिस और एग्जीक्यूटिव दोनों के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सिविल राइट. फाइन. सो इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल पास्ड? नो. तो टिल दैट बिल इज नॉट पास्ड, आई थिंक कोई ऐसा इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो सच क्वेश्चन विच आई थिंक. So in Article 20, what you can write only one thing. Right, Article 20, it is a civil right, very important civil right. And फिर next है, it is a restriction on both legislature as well as executive. You understand ex post facto?
Ex post facto word. Is the ex post facto word used in the Constitution? Is this word there in the Constitution? Double jeopardy is there in the Constitution? No. These words are not used in our Constitution. US Constitution में words हैं. ठीक है. And next देखो right, Article 20 also form one of the feature of Dicey's rule of law. Dicey's rule of law. And this is a restriction only related to the criminal law. Fine. तो first restriction है a person on whom conviction proceedings are going on. ठीक है? That person has certain rights. अब what is a right? Right is a protection actually. What protection a person has? एक तो punishment. You can ask punishment for what? Fine. So you will be punished only if you have violated the law in force at the time of commission of act. मतलब तुम्हारा ये जो act है is a offense under the law at the time of commission of an act. Fine. Means it should not, मतलब it does not allow कि तुम्हारा कोई action है which is not a crime as per present law, तो executive passes a law, fine, with retrospective effect, back date से, because taxation laws या बहुत सारे laws retrospective effect से भी हो सकते हैं, लेकिन criminal law will not be with the retrospective effect. तो इससे protection किया जा सकता है, वरना executive can make a law and punish a person. Have you understood this? तो ex post facto इसी को कहते हैं. Ex post facto means after the commission of the act, you will not say this act is crime. Is this clear? Plus, the punishment which you will get will be not more than what is prescribed on the date you have committed the crime. But in future, government amends and let's say reduce the punishment, then you will get the benefit of reduced punishment. But later on, punishment has been increased, then you will not be given the increased punishment. तो ये protection of civil liberties है. अब next है double jeopardy. Double jeopardy means same crime you will not be punished. ये होगा कैसे, कब सिचुएशन में ये होता है? हाँ, जिसमें तो डबल jeopardy means suppose a case has been filed in one state and the case is finished, fine. Now same case cannot be filed in some other court against me. Means I should not be harassed for the same crime
more than once. Fine. Now, this will not apply if somebody has committed some crime under IPC. Plus, at the same time, public official, his action is also punishable under some departmental rules and proceedings. That proceeding will not be considered as double jeopardy. Fine. तो इसमें फिलहाल DNA फिंगरप्रिंटिंग वाला है, उसका कोई खास रेलेवेंस नहीं है भाई. अब नेक्स्ट है, इसमें कुछ पूछना है किसी को? और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, एक ही क्वेश्चन बनता है, इज इट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन जुडिशरी ऑल्सो? ठीक है, बट इतना बेसिक है ये तो. नेक्स्ट इज आर्टिकल 21. Article 21 and its relation with Article 19 I have explained already. अब ऐसा कोई है जिसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ऐसा कोई है जिसको नहीं पता है? बाकी जुलाई वाले क्लास जब था तब आई हैव एक्सप्लेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन 19 एंड 21. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? तुम्हें क्या नहीं समझ में आया? दोनों क्लास में तुम एब्सेंट है, ठीक है. बाकी तो नो नीड टू डिस्कस इट अगेन. यू अंडरस्टैंड हाउ द इंटरप्रिटेशन हैज चेंज्ड फ्रॉम मेनका गांधी केस. नाउ इट इज सिमिलर. बट आर्टिकल 21 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. फिर 19 एंड 21 ही सबसे प्रॉब्लमेटिक है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. देयर आर सो मेनी राइट्स. So let us see, and do you understand the concept of liberal interpretation? ठीक है, तो आर्टिकल 21 जो भी राइट मन में आता है जुडिशरी के, ठीक है, वो आर्टिकल 21 में डालते जाते जा रहे हैं. ठीक है, तो it has so many rights. So some rights can be asked in prelims also. Fine, तो वो केवल लिखना है आर्टिकल 21. तो you can just basically some rights and related judgments. Fine. और उसके अलावा कुछ जो debates हैं but I don't think बहुत relevant हैं, like living will वाला issue, then suicide as a crime. Is suicide a crime? Is a punishable offense? Yes. Continues to be a punishable offense except for which case or in which situation? If a person is mentally, तो mental health care act के अलावा still it has been retained. So should suicide be treated as a punishable offense? No. ठीक है, why suicide should not be treated as a punishable offense? स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, अब अपना लॉ कहता है कि भाई अगर तुमसे गलती हो गई, ठीक है, सुसाइड कमिट करने में तुम्हारा मेथड उतना बढ़िया नहीं रहा, ठीक है, देन हम सिखाएंगे, ठीक है, देन ऑल्सो यू विल बी सब्जेक्टेड टू इम्प्रिजनमेंट. बट व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द पर्पस टू make suicide a punishable offense? क्या पर्पस है? यस, तो इस स्टेट का किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं. दिस इज अगेन अ कॉलोनियल लॉ. और पर्पस क्या था? पर्पस था कि लोग बैठ जाते हैं हंगर स्ट्राइक पे, खासकर जैसे गांधी जी दम खाने के लिए बैठ गए, ठीक है, और मान लो गांधी मर गए, देन इट विल बी अ बिग लॉ एंड ऑर्डर इशू. ठीक है, तो वाई दिस इज कंटिन्यूड एज अ क्राइम? द आइडिया इज नॉट टू प्रोटेक्ट समबडीज लाइफ, बट इट शुड नॉट क्रिएट न्यूसेंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर. अब another reason also why it is continued,
It is continued because it gives opportunity to the police to harass that person and his family. ठीक है, तो family because committing suicide and abetment to commit suicide, that is a bigger offense. Fine. So when person commits suicide, वो तो निपट जाता है, लेकिन उसकी जो फैमिली है उसको प्रॉब्लम हो जाती है. और इसको रिटेन क्यों करते हैं? बिकॉज पुलिस वालों के लिए बड़ा फायदेमंद है ये. ठीक है, तो इट्स अ सो दिस दैट इज व्हाई दिस शुड एंड. इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. तो स्टिल गवर्नमेंट हैज नॉट एंडेड इट एज अ ऑफेंस, दो प्रैक्टिकली नोबडी इज पनिश्ड. ऐसा कोई पनिश नहीं होता है, लेकिन पुलिस वाले को पैसा कमाने का एक स्कोप बनता है. ठीक है, तो फिर ये इट डज मोर हार्म एंड ऑब्जेक्टिव इज समथिंग वेरी डिफरेंट देन व्हाट गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट. तो राइट द केसेस जो प्रीलिम्स में ऐसे आ सकते हैं रिलेटेड टू या राइट्स एंड द इम्पोर्टेंट केसेस. राइट्स विच फ्लो फ्रॉम राइट टू लाइफ. एक है राइट टू स्पीडी ट्रायल. ये जब फंडामेंटल राइट है तब ये हालत. ठीक है, राइट टू स्पीडी ट्रायल. राइट द केस हुसैन आरा खातून केस. हुसैन आरा खातून केस. हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. जो भी गड़बड़ सड़बड़ मतलब मैक्सिमम बिहार होता है. ठीक है, ठीक है. कभी मतलब ऐसे तुक्का उक्का लगाना है तो लगा देना, थोड़ा कम गड़बड़ लगे तो यूपी लगा देना. ठीक है. राइट टू स्पीडी ट्रायल, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. नेक्स्ट is right to travel abroad is a fundamental right. Yes, you can ask bhatta allowance from the government कि हमें घूमने जाना है. ठीक है, लिखो right to travel abroad. मेनका गांधी केस. right to travel abroad, मेनका गांधी केस. right to clean environment. ये तो MC मेहता के होते हैं यही केसेस. राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट. MC मेहता. CNG VNG वाले वो सारे इन्हीं के केसेस हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट. राइट टू लाइवलीहुड. राइट टू लाइवलीहुड मीन्स क्या होता है? A sort of right to employment. Right to livelihood मतलब right to employment, to earn your livelihood. Fine. Write the name of the case. Olega Tallis. OLEGA. Olega Tallis case. TELLIS. Olega Tallis case. अब जो next है वो important हो सकता है एग्जाम के लिए. Right to education. इसमें ये फर्स्ट प्रोनाउंस किया था मोहिनी जैन केस. ये प्रीलिम्स में आ सकता है, मोहिनी जैन केस. अब मोहिनी जैन केस में बहुत ही वाइड था राइट टू एजुकेशन. मतलब अभी कैसा है, इन फॉर अ लिमिटेड ईयर्स ही है. तो जो नेक्स्ट जजमेंट है उसने थोड़ा उसको टोन डाउन कर दिया. ठीक है, मोहिनी जैन केस वॉज मोर रेवोल्यूशनरी. वी विल डिस्कस इन राइट टू एजुकेशन. बट नेक्स्ट केस राइट टू एजुकेशन का है उन्नी कृष्णन. UNNI. उन्नी कृष्णन. KRISHNAN. उन्नी कृष्णन केस. उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. अब ये वाले क्यों याद भी रखने? बिकॉज जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म पर क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन गिव एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट राइट अगेंस्ट टॉर्चर.
बंधुआ सॉरी राइट अगेंस्ट टॉर्चर, सुनील बत्रा केस, इन सब से PIL सिस्टम स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, सुनील बत्रा केस। नेक्स्ट राइट टू फूड, PUCL, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, PUCL वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस, राइट टू फूड। राइट, फिर को राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस, बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस। एंड इसी से शायद ये सेम केस है या डिफरेंट, एशियाड विलेज वर्कर, इज इट अ डिफरेंट केस? लिख लो, यू फाइंड इट आउट एंड टेल मी नेक्स्ट क्लास में। एशियाड विलेज वर्कर्स केस, एशियाड विलेज वर्कर्स केस, these cases led to the beginning of PIL. Next, right to information, SP Gupta versus Union of India case, SP Gupta versus Union of India case। और एक और है राइट टू इंफॉर्मेशन का, राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट इन वर्क प्लेसेस, एट वर्क प्लेसेस, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। Against protection against sexual harassment at workplaces, Vishakha case। फिर right to privacy, that तो you must be knowing, कौन सा केस? पुट्टू स्वामी केस। फिर राइट टू डाई विद डिग्निटी, ज्ञान कौर केस, ज्ञान कौर केस, राइट टू डाई विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ जिंदा तो नहीं रख पाएंगे, लेकिन GIAN, ज्ञान कौर केस। वैसे भी ये सब थोड़ा डिटेल में करने पड़ेंगे। ज्ञान कौर case, fine. So that's all